भाई छोकरों को एम्बुलेंस में भेज दो। ભાઈ આ કયો વિસ્તાર શું બનાવવાની હતા? ઘર ઢસલી પડ્યું છે. કેટલા જણ અંદર હશે? આશરે 4 જણ હતા, પણ 4 માંથી એક છોકરો બહાર નીકળ્યો છે. હવે બીજા અંદર 3 છે. એક છોકરી બી છે અંદર. કોઈને અત્યારે જાનહાની માનહાની એવું કંઈ કશું ખબર નથી. અમે દબાયેલા છે. बस अंदर मत जाइए, अंदर मत जाओ, सब साइड में आ जाओ, काम करने એમને કામ साइड में जाओ भाई, જગા દે દો જરા. આશરે ઘણા વર્ષો જૂનું આ મકાન હતું. જર્જરિત મકાન હતું. કોઈ કારણોસર આ મકાન પડી જતા અમુક લોકો અહીંયા દબાયા છે. હાલમાં એમને બહાર નીકળવા માટે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવે છે. अभी तिजोरी को छोड़ो नहीं, खाली पहले जान बचाओ पहले बच्चों की। भाई नीचे छोकरा होगा यार. सबको बात करती है ना, सबको बात कर रही है ना ભાઈ. भाई कोई भी एक था भाई दो इटालियन बाहर, भाई कोई इटालियन है जुबियान में अंदर रहेगा। हां जुबियान बाजू में जुबियान थोड़ा मेरे को अंदर जाने. लड़की को निकालो, लड़की को सलीम जुबियान बाजू में छोकरी आ गई। धीरे 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 चल आपा, हाँ इसको आराम से बांध लेगा पानी में। पावड़ा दो ना, पावड़ा लाओ। कितने गए हो भाई? कौन है? कितने गए जो अंदर? एक जन एक जन अंदर खाली. ये पत्र हटाएंगे नहीं देखा. હાલમાં પણ પોલીસ ઘટના સ્થળે આવી ગઈ છે. बच्चे हो गए ना इन लोग, वो दो नौकरी पे हो गए. आ गए तो बूम मारो, सर्वर બીજા બધા સાઈડમાં રહેજો, વધારે કામ કરવા याद करो. येलो आ बाजू से छोकरा ये इधर भाई थोड़ा बाहर आ जाओ, मेहरबानी करके बाहर सारा फोटा भाई आपको बाहर आ जाओ. बोला क्या ऊंची है आ बाजू की, आ बाजू मत जाओ यार. आगे पकड़ दे भाई, एक बाजू जा हटो. देखो बीटा पे तो मत करे ना यार. 2 मिनट उतार मत करो विशाल भाई, शांति रखो. पीछे आ जाओ, पीछे બને એટલી ઈંટો બહાર જવા દો. બને એટલી ઈંટો બહાર જવા દો. बाहर थोड़ा दब जाओ. इतने में गए, इतने में आप खड़े वहीं पे वो वहाँ बाहर निकाल
ये बड़ा पत्थर है उसको खड़े 2 मिनट लो लाइट पकड़ो दो भाई ए ऊपर वजन मत दो वजन 2 मिनट भाई उतार मत करो ये बेटी को उसका ही लगा दो साइड पे ले साइड में एक मिनट साहब पर यार लगेगा अब लाइन लग जाओ अब तो आपको लाइन इसको बाहर जाने दो ये पेटी बाहर जाओ तो पेटी बाहर जाओ तो पेटी बाहर जान दो चला जा इधर निकाल लेता हम टेंशन मत खाइए अंदर अच्छा है લાંબી નળસ છે ને એ નળસ લે સાહેબ આ બાજુ છે જો આ લાંબી લાંબી હા લાંબી નળસ છે ના ના પેલા એવું એક્ઝેક્ટ કરો સલીમ લાંબી નરાશ લઈ થોડા દાબદા તો પૈસા બહાર થોડા હલકા હો જાઓ जो बड़ी काटता रहो થોડા હલકા વધારો ये बल्ली निकल जाएगी આ ઉપરથી પડશો ધ્યાન રાખજો આ બાર पहले हम मोड़ी સાહેબ છોકરા અંદર कोई तो हटा दे ખાલી થોડા હલકા હો हाँ वही ने ये पहले ये पत्थर भी निकाल ले હા બસ છોકરા આ જાઓ ને ટેન્શન બધા બહાર જાઓ ले जान दो पीछे એ બધું જવા દો બહાર બધું हाँ साहब ये कपड़े तो है भाई कपड़े तो इधर दिखे ना सब ये साइड ही होना चाहिए ठीक है हाथ लगा दो हाथ लगा ओके આ એટલું તમે બહાર જાઓ તો બહાર हाँ साहब आवाज तो बारह बजे हल्कू थी है એટલે હલકું થઈ જાય જગો થઈ જાય એ મેરા બાંધર હતા એ બડી લાદી ઉઠાવી हमने 2 जना आ जाओ આ લાદી ઉઠાવો અને તિજોરી બને તો ઉઠીને બહાર જ કાઢી નાખો हाँ साहब को બોરા આ લાકડો લઈ લો આવડો ये तो रेंड एक का बराबर है नहीं नहीं एक तो देखो बहुत देखो लो जाने दो आ जाओ દીવાલ હલ રહી है हां कौन सी લો સાહેબ नहीं वो नहीं साहब लो कोस आई આ કોસ આઈ કોસ जो जो आगे निकल खाली आ ऊपर वालों भाई पब्लिक काम आ जाओ थोड़ी बाहर आ जाओ तो दिक्कत रहेगा પબ્લિક કમ ત્રણ આવી ગયા आवाज भी नहीं आ रहा साइड कर दिया वालों ने साइड में लो साइड करिए आपो છોકરાઓની જરૂર નથી તમે રહો આ નાના છોકરાઓ ચાડો નીકળ જાઓ બહાર ફાયરની જરૂર છે અંદર ધીમે અંદર અંદર ધીમે આપણે ડ્રાઈવરને બોલાવો ને ફાયર દ્વારા રેસ્ક્યુ કમ્પ્લીટ છે હાલમાં પણ એક વ્યક્તિ અંદર નાનું બાળક છે તેને રેસ્ક્યુ કરવા માટે ફાયર પોતાની પૂરેપૂરી તાકાત લગાવી રહી છે તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી જૂની ઇમારત હતી અને વરસાદના કારણે આ ઇમારત પડી છે ए मुस्तकीम बाहर निकल बे बाहर निकल के आगे बैठ दो उसको ए भगाओ भगा ले आगे को बोलो
સાઈડ પર આવે पीछे से रखा नहीं है क्या भाई? वो सकड़ी कर दी यहाँ से ना जवाता हूँ पीछे से खाली एक जालिया खोल पीछे से निकाल लो હાલમાં આપણે અહીંથી ઉપરથી જોઈશું. लाओ मीडिया वाले अब ये उतार के ने डालेंगे ना सीधे. તમે જોઈ શકો છો કે ફાયર દ્વારા કેટલી મહેનતથી અમુક વ્યક્તિઓને નીકાળવામાં આવ્યા છે અને હાલમાં પણ એક બાળક ફસાયેલું શોધી રહ્યા છે. આ કયો વિસ્તાર છે અને આ ઇમારત કેટલી જૂની હતી? નવાપુરા ખાટલીવાડ જે આવી जर्जरती इमारत थी 80-90 વર્ષ તું બોલજે ને ફટાફટ બોલ દો ને ચાલ. 80-90 વર્ષ पुरानी इमारत है. जर्जरती इमारत है. परिवार एकदम गरीब है. मेंटेनन्स कराई सके एवी कोई पोजीशन है नहीं. એમના ઘરમાં કરવા વાળો કોઈ નહીં. પણ એવું કંઈ છે નહીં. હમણાં બેસેલા જમવા માટે ઝાડ એને બધું પડ્યું અંદર. ઓકે, આશરે જાણવા મળ્યું છે કે 3 થી 4 જણ હતા, એમાંથી 3 જણને બહાર રેસ્ક્યુ થઈ ગયા છે. એક બાળક ખબર નહીં ક્યાં છે ને સૌથી નાનો જ બાળક છે ને એનો અવાજ પણ આવતું નહીં. अब अल्लाह अल्लाह खेर करे. ફાયર બ્રિગેડ કરી રહ્યા છે કોશિશ કે फायर ब्रिगेड और पुलिस तंत्र साરું કામ કરી રહ્યા છે. ફાયર બ્રિગેડ વાળા એમના મેતે કરી જ રહ્યા છે મહેનત કે મળી જાય બહાર. પહેલાના બધા છોકરા બી લાગી ગયા છે કે મળી જાય કોઈનું બી બાળક હોય. પોલીસ વાલે બી આए पुलिस वाले की मेहनत देख खाली. पुलिस वाले को अपने ने बार बार निकालने નહીં એ ફાયર બ્રિગેડ કે હોય मैं अपनी छुट्टी जा જાણ કરે તો આવે જ ને. ફાયર બ્રિગેડ આવે અને पुलिस का काफला भी आ ही जाओ सीधा. मीडिया भी आ जाओ ने मीडिया भी आ जाओ. एक मीडिया वाला तो नीचे ही है ना. જૂની તો હશે ઈમાન હતા. 70-80 વર્ષ જૂની છે. छोकरा कितने बरस का है सबसे छोटा? कहते हैं कि पीछे से रास्ता आएगा तो फायर ब्रिगेड वालों को कि पीछे पीछे साइड से निकला था रास्ता वो जाली है सब जूना है ना. दस्ता हो जाएगा पीछे से भी कहीं टाइट होएगा खोलने जाएंगे तो यहाँ निकलेगा पीछे से
બલ્લી વચ્ચેની ખેલ દિવાલ આખી એમ પડેલી એમથી પડી છે એમથી પડી આપેલી સામે દિવાલ દેખાય છોકરી હા એ એમ પડી એ દિવાલ આમ પડે. જો તમને ખબર પડે તો છે પતરું જો એમ પડી જાય હજુ આ પડવા જેવી છે સિંગલ સામેની દિવાલ कोई तो ये शांति से हाथी कर रहा है. हाँ वो छोकरा ही है. हाँ इसके लिए तो हाथी कर रहे हैं क्या धीरे धीरे इसके लिए हाथी कर रहे जो छे પેલા હાથी પેલી માટીને હટાઈ રહ્યા છે. चलो ये फालतू का इंसान बाहर निकलो. हाँ तो बराबर ना भाई वो कर रहे काम तो दूसरे छोकरे बाहर निकले ना. हाँ फायर ब्रिगेड वाले उनकी मेहनत कर रहे वो सब. उनका सामान ढीला पड़ेगा या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह रहम या गौस मदद या गौस अल 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 मदद या एक दिन 2 दिन पहले वो पटना सभी का पकड़ नहीं हो गया टी शर्ट में पेट का भाग दिख रहा है कमर के पेट का भाग. पहले टॉर्च चालू रख के यूज दिखा रही हूँ समझ गया भले जितना भी जाओ ऊर्जा से. कुछ है उसके लिए तो वो शांति से कर रहे संभाल के. में वही पोजीशन में दे है ना. अल्लाह रहम अल्लाह रहम अल्लाह रहम कहाँ से सांस लेगा यार देखो कहाँ से लेगा सांस ऊंधाई की और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई उसकी है पूरी इस पे कितनी बड़ी हो पड़ी है. हाँ। रिस्पॉन्सर नहीं है वो ये गाना इसके लिए वो हाथी ने वो कर रहा है हाथी ने सब हटा रहा है. अंदर सीधा ना उसको बल्ली भी गिर रही थी उधर बूम पाड़ दे के ना एम्बुलेंस की जगह कर के रखो बेलने से. एम्बुलेंस की जगह करो क्योंकि सब छोकरे थे सब मिलने के खड़े हो गए ले सब.
निकला 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 खुद नहीं, अभी निकालने दो, इतना नहीं। हाँ, वो बेहोश हुआ होगा, मुश्किल वाला है ना बेटा। चलो चल